Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the multiple choice questions discussion of the subject OM and SM. ठीक अछि OM SM रो most important and selected multiple choice questions रो discussion करूछु हमें. Okay, as you know OM रो most probably हमरो theoretical question part रो we are getting MCQ questions and theoretical part रो we are getting subjective questions of different chapters like the first chapter and the third and seventh chapters I guess. ହେଲା ଦି ତିନିଟା chapters ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟାରୁ କି ଆମକୁ directly subjective questions ଆସୁଛି. Okay, so the first question is OM deals with OM माने operational management deals with what? Deals with अच्छा एडा को मते active participation दरकार हैला पिलाने मते ग्रुप रे आंसर करे अछि ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ओके ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर करि परिए. ओके OM generally deals with what? खाली बोथ tangible and intangible product ना tangible product and intangible services, tangible product ना intangible services. What would be the answer? जल्दी within 3 seconds तुमको कौन ना कौन गोटे response देबार अछि because मु खाली कहले किछि हबनी. Answer please. Both. Okay, शुभश्री कोची both. मु कहली 3 सेकंड संग संगे आंसर करिया कोची कोन होची आंसर कोन पे मिलले मते. Fine, the answer is option D. ठीक अछि. The answer is option D. माने operational management deals with both what? Deals with tangible product and intangible services. Intangible services in the sense कौन हमरो product assessment, after sale service and tangible products माने कौन जहां भी हमें products बिकुछु से सब जिंस. Okay, one of the example of pure service रो गुटे example कौन मते को. One of the example of pure service, product service, repairing service, all of the above or teaching. Come on quick. मु कोची राइट आंसर देबा पे नै मु कहूची कोन आले गुटे आंसर दियो बिकॉज़ एटा प्रैक्टिस सेशन डा. टीचिंग वेरी गुड. two ऑप्शन ऑन करे टीवी. ओके all of the above. ठीक अछि all of the above रे all of the above everything comes under service. Okay, but teaching is something which is a pure service. Okay, तापर objectives of operations management can be categorized into how many types? केते टाइप्स को कैटेगराइज हो जेडा objectives of operation management केते टाइप्स को कैटेगराइज होची. कम ऑन क्विक. 2 3 4 7 आंसर करो. गुटे आंसर टाइप करियो केते समय लाउची. Objectives of operation management can be categorized into how many types? The answer is 2 types. 4. Fine. माने सेटा सब कैटेगरी हेतिबो सूरज ठीक अछि बट प्राइमरीली द कैटेगरीज आर 2 टाइप्स. ओके, तापर से कुछ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इज ए दीडा भितरो गुटे ऑब्जेक्टिव कोन मते को. One of the objective of operation management is one of the objective of operation management is the answer is customer service. Okay, so technical issue. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पीयूष तो फोन टेके फोन व्हाट्सएप पे लेके. The principal function of customer service is
The principal function of customer service is principal function of customer services. Customer service ର meaning କ'ଣ? Any service we are giving to the customer related to the product he has bought or he is supposed to buy before or after actually purchasing the product by a customer comes under the purview of customer service. तो ये कौन principal function of customer service କ'ଣ? Option number 1. मेघना कौन option number 1. बाकी सब कौन कौन? Actually, we have other options in it. Okay, it miss heji, so please write down C and D options. Manufacture service, manufacture service, transport, supply. माने two types of questions. Good day exam रे तुमको खाली A, B, C and D other one दिया इतना. एबे आंसर जेमती खाली A and B जदि दिया आइछि तो A डा हबो जदि D ऑप्शन डा दिया होउछि by any chance. Manufacture, transport, service, manufacture, transport, supply and service जदि दिया होछि तो ऑप्शन नंबर D हबो. तमे डिफरेंट दीडा जकर डिफरेंस तमे मार्क करि परिबो एडी. ऑप्शन डी वेरी गुड. मेघना कोची ऑप्शन डी बिकॉज़ देखो एडी कस्टमर सर्विस रो सीक्वेंस टा देखो तमे मैन्युफैक्चर सप्लाई ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस. यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग देन यू आर एक्चुअली सप्लाइंग इट टू द वेयरहाउस देन यू आर ट्रांसफरिंग इट टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आ सेडा जेतळ को बिका हे देन यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज. बुझी पाला सेडा होची फर्स्ट ऑप्शन जदि एडा दियानी. बट लास्ट नंबर ऑप्शन डा कोन कोच देखो हमरा मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्ट देन सप्लाई करूची देन सर्विस प्रोवाइड करची. तो एमिति भी हेई पारे मैन्युफैक्चर होची सेडा सप्लाई कोनी हबो कि सेडा ट्रांसपोर्ट हबो का पाखु सप्लायर पाखु जेतळ हमर होलसेल क्वांटिटी रे परचेज होची तो सेडा हे जेबा हमर सर्विस. तो कस्टमर सर्विस रे से तुमको दीडा टाइप ऑफ क्वेश्चंस पचारि परियो बिट क्वेश्चन रे. वन थिंग इज जेतळ को नॉर्मल रिटेल परचेज केस टा कोन हबो एंड होलसेल परचेज केस टा कोन हबो. तो रिटेल परचेज केस रे आंसर होची एडा होलसेल परचेज केस रे आंसर होची एडा. ओके you will not get this type of bit questions for practice anywhere else. तमे स्कैनर भी ट्राई करो एता सब तुमको मिले अने हला. obviously scanner questions are included in this but गुटे स्कैनर क्वेश्चन रो केते वैरायटी हे परियो सब जगह इंक्लूड हे गिरे अछि. ओके फाइन. ओके मेघना the next question is बाकी पिला ना आंसर करो ट्राई करो. conversion of input into output is known as एटा तो मोस्ट सिंपल क्वेश्चन डा. के 2 फाइन सुपरश्री सेडा तमर से आंसर थिला मते बे शो करछि. ओके द कन्वर्शन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. कम ऑन क्विक मो 3 सेकंड्स दोछि समस्त को रेस्पोंड करियो पड़ियो. आई विल नॉट रिपीट अगेन. ए नहीं इट्स एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. इनपुट इनटू आउटपुट केमति माने इनपुट आउटपुट को कन्वर्ट होछि टेक्नोलॉजी यूज हेकरी बट द प्रोसीजर को कोन कहउछु. ऑप्शन बी वेरी गुड मेघना ऑपरेशंस मैनेजमेंट. Operations management. Okay then the desired objective of production and operation management is माने production और operation management रो desired objective कोन हेई पारे. excuse me कोन हेई पारिबो. 7 number point. The desired objective of production and operation management is कौन हबो. Very good Shubhashri. Optimal utilization of available resources. Optimal utilization of available resources. Good Suraj. Optimal utilization of available resources. काहे किसी कोची production and operation management माने कौन actually you are manufacturing something then you are converting the input into output. दीडा जगह गुटे सेक्टर अंडर रे आसुची तो दीडा जगह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन रोची जहां भी रिसोर्सेस हम पाखरे रहिला सेडा को हमें किमती बेस्ट वे रे यूटिलाइज करबा in order to convert them into possible outputs. Okay fine. Good Meghna, Prakash and Subhashri. Then
Which one of the following is not an activity under production and operation management? कोड़ा activity under रे आसुनी देखु देखु जान दे पारिबो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट रो मीनिंग मु कहिली तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज माने कोन प्रोडक्शन हाउस गुटे जागरे रहियो प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग माने कोन मटेरियल ला केमिति हम यूटिलाइज करूछु आउ मशीनरी ला केमिति हम यूटिलाइज करूछु प्लांट लेआउट माने मशीनरी रो जहां भी ये प्लेसमेंट प्रोडक्ट डिजाइनिंग तो सेटा भी मैन्युफैक्चरिंग अंडर आछि तो आंसर कोन होबा हमर market penetration. Market penetration is not something that comes under production and operation management. Very good Suhana. Market penetration. Market penetration को department under आसीबा हमरो marketing or sales and distribution department under रे आसीबो एजा सब को department production plus ऑपरेशन मैनेजमेंट तो तुमको क्वेश्चन टा रिवर्स भी हेई परिबो एथरे से डायरेक्ट तुम क्वेश्चन पचर परियो कोन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर द सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तो योर आंसर विल बी डायरेक्टली मार्केट पेनिट्रेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड एसेंशियली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज Utilization of resources means what? Utilization of resources means what? तो मन को 9th नंबर टा resources utilization रो meaning कोन? Okay, option D Subhashri and Meghna कोचंदी option D remaining people के प्रकाश भी कोची option D. Very good, the answer is option D. काहेंगी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस माने खाली रिसोर्स यूज करियर नै रिसोर्स यूटिलाइजेशन रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन जेति की भी रिसोर्स हम इनपुट करछु वी हैव टू पुल आउट द मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम इट देन कम करबा रिसोर्स रो लॉस तो मिनिमाइज करबा मनोरम पाखरे किछि पेरिशेबल रिसोर्सेस अछि तो सेजा कोन करी हमें विल ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस माने सेजा फर्स्ट यूज करबा ताकि सेडा इवापोरेशन लागि खराब होबनी मिनिमाइजिंग अंडर यूटिलाइजेशन और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस लॉस भी मिनिमाइज करबा अंडर यूटिलाइजेशन भी मिनिमाइज करबा तो वेरी गुड Which one of the following is not an objective of operations management? कोड ऑब्जेक्टिव नहीं तमे एडा रे प्रैक्टिस करर अछि कहले एबा का प्रैक्टिस कर परियो बिट क्वेश्चंस बिकॉज़ यू विल नॉट गेट माने सेपरेटली किछि टाइम मिलेबनी तमको प्रैक्टिस करिया पई तुमको जाना पड़े अछि तमे न्यू क्वेश्चंस किंदी अटेंड करछ से कोछि नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेंडर डी नाइस भाबो ठीक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट अंडर रे कोन आसुनी the option will be the answer will be option number B to satisfy customers by providing right thing at the right place at the right time hala one of the most important questions एथरे सब जगह तुमको आंसर लागुथो most probable chances अछि next question देखो production and operation management distinguishes itself from other functions such as personnel marketing finance etc mainly by its primary concern तो कौन अछि तार प्राइमरी कंसर्न एथरे से कोची प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट ता डिस्टिंग्विश कोची अदर फंक्शंस को बट तार प्राइमरी कंसर्न को धरिगिरी तो व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न इन इट कम ऑन आंसर द क्वेश्चन
ये जा तमरो एग्जाम क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी वर्कबुक स्कैनर सब आंसर okay the answer is option number B तो से कौन कोच देखो in the confusing questions often we tend to see in the question examination तो से कोची को particular department टा गुट्टे रिसोर्स को धरिगिरी चारटा चारटा फंक्शन को केंद्र क्लासिफाई करो से फर्स्ट ऑप्शन हमको देला कन्वर्शन बाय यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंसर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज माने कोन ट्रेडमार्क कोन गुटे गुटे डिपार्टमेंट को धरिकी चेंज हे जिवो की चेंज हबो की नाही देन से कहला फिजिकल रिसोर्सेस मनर गोटे कंपनी अछि सेतरे कॉटन यूज होछि ओके कॉटन इंडस्ट्री रा कॉटन रॉ मटेरियल रे भी यूज होछि कॉटन ना वाइपिंग पे भी यूज होछि कॉटन ना आ बाकी जगह रे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रे मथि ताको किछि लाइक इंक पडियाले से जा पे भी यूज होछि तो गुटे पर्टिकुलर रिसोर्सेस टा गुटे गुटे डिपार्टमेंट रे केमिति यूज होछि हला से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रो केमिति माने से रिसोर्स रो केमिति यूसेज टा ताको धरि के डिपार्टमेंट टा चेंज होछि तो से पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पचाछ बुझि पाला ना नहीं कन्वर्शन बाय यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस ओके एमिति टाइप ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थाउची पिला नंबर मोस्ट प्रोबेबल भूल एडिया होची तांका ना ऑप्शन सी सिलेक्ट कर दोची कन्वर्शन बाय यूजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर फंक्शंस से तो कोची फंक्शंस किमति डिवाइड हबो आ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर फंक्शंस कोडी आसिला समस्त बुझिला ना आथरे बुझेबी बुझिला एबे इंपोर्टेंट मार्क कर क्वेश्चन ना ता किछि डाउट अछि संग संगे पछरा ओके फाइन प्रकाश सुन फाइन सो सी हमको क्वेश्चन रे कोन पछला से कहिला कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट माने ए भितरे कोन आछि हमें पढलो कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन आसुछि तो सी कहउछि से रिसोर्स यूटिलाइजेशन को धरिगिरी हमरा चारटा चारटा कैटेगरी ऑफ फंक्शन को हमें केमति डिवाइड करे तो मु कहली रिसोर्स होछि गुटे कॉटन से कॉटन डा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे गुटे सेल्स डिपार्टमेंट रे गुटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रे गुटे गुटे प्रकार रे यूज होछ सेल्स डिपार्टमेंट रे मे बी तांका ने छडा रॉ मटेरियल सेल करिया को धरि की जाउछन तांकर कॉटन डा प्रोडक्शन रे कोन तांकी सेडा कॉटन डा को धरि के कॉटन टी शर्ट गुडा को प्रोड्यूस करूछन हैला एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रे कोन तांकी जेतळ को फैब्रिक सहित किछि काम करछन कि डिजाइनिंग किछि भी करछन तो वाइपिंग करिया पे तांकी कॉटन यूज करछन तो से पर्टिकुलर कॉटन गुटा रिसोर्स केते प्रकार रे यूज हैला सेडा को धरि कोन हमर फंक्शन से डिवाइड होछ ना नै एबे बुझला ना बुझलानी फाइन थैंक यू सो मच देखा ओके four dimensions of competitiveness that measure the effectiveness of operation function market important एटा दी तीन थोरे पचार क्वेश्चन एग्जाम रे anyone who had gone through the माने स्कैनर क्वेश्चंस तांको एटा टिके फैमिलियर लागिवो दी तीन थोरे पचार क्वेश्चन ना four dimensions of competitiveness that measure the effectiveness of cost function are what को four functions को फोर फंक्शंस हे परिवो ओके सुभश्री ए कोची बाकी पिला ने कि मेघना इज सेइंग डी ओके एटलीस्ट पीपल आर ट्राइंग मते भल लागो सेडा थैंक यू सो मच four dimensions of competitiveness that measure the effectiveness of operation management under कोन आसुची again से production and manufacturing आसची से कहउची को जिंस को धरि कि तुम ऑपरेशन सिस्टम डा बहुत भलो अछि कोइ कि तमे कहि परिबो ना तार कॉस्ट किन अछि सिफाना डी कहउची फाइन कॉस्ट क्वालिटी डिपेंडेबिलिटी एज अ सप्लायर फ्लेक्सिबिलिटी हला तमे केते फ्लेक्सिबल डिसीजंस नोचो मार्केट को धरि कि कॉस्ट स्ट्रक्चर केमति रखिचो सप्लायर ऊपर तुम डिपेंडेबिलिटी केमति अछि माने मनर सप्लायर किछि देला नै तमे कोन प्रोडक्शन बंद कर दोछ ना स्टॉक किछि रखुचो
हैला तापरे क्वालिटी केमती रखुछ कॉस्ट कम करी क्वालिटी भी खराब कर दउछ कि कॉस्ट अधिक चार्ज करी क्वालिटी भलो दउन कि से सब जिंस रो आगे जणा पड़िबो तमरो कॉम्पिटिटिवनेस माने तम कॉम्पिटिटर तमे केते भलो पोजीशन रे अछ कहिगिरे ओके okay next question is generally the size of the order for production in job production is generally the size of order for production in job production is job production रे size of order केमती रहुची job production रे size of order केमती रहुची केमती रहुची job costing job production come on answer कौन पे रहेले okay very good small tapre next question good Suraj the desired objective of production and operation management is it already discussed question that you must be able to answer it the desired objective of production and operation management is very good optimal very good Subhashri optimal utilization of resources very good Subhashri and Meghna optimal utilization of available resources tapre to decide workload for men and machines co particular forecasting under asuchi एडा what is the type of forecasting model used here to decide workload for men and machines केते काम हमें मैन को देबा केते काम हमें मशीनरी को देबा को फोरकास्टिंग अंडर आसुची डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर रे पढ़थिला come on answer come on answer it D no the answer is short term forecasting देखो इनिशियली केते काम गोटे लोक करि परिबो केते काम में मशीनरी को दबा से दीडा जिंस जगह प्रेडिक्ट करियार अछि ले कोले शॉर्ट टर्म रेगा में करिया बुझि पाला ओके द आंसर इज बी फाइन सुहाना तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूज्ड हियर लॉन्ग रन रे केते मैन रे कोन रे आज से मनुष्य अछि काली बंची थियो नै जणा नै बुझि पाला आज मशीनरी काम करछि काली अछि नै जणा नै तो फिलहाल पई आज केत जण आछन्नी केते मशीनरी अछि केते डिमांड अछि सेटा शॉर्ट टर्म रे माने 1 वीक को 2 वीक्स को 3 डेज को गुड थरे सेमती ओके डिमांड फोरकास्टिंग रो क्वेश्चन the act of assessing the future and making provisions for it is known as the act of assessing the future and making provisions for it no not planning the act of assessing the future and making provisions for it provisions माने होची गुटे anticipatory जिंसो no not D very good it's forecasting very good Meghna the act of assessing the future and making provisions for it is known as forecasting future को तमे assessment करछो ओके शुभश्री forecasting तो फ्यूचर को तमे असेसमेंट करूचो देन यू आर मेकिंग प्रोविजंस फॉर इट माने assumption नेगिरी तमे किछि गुटे जिंसो सेफ पॉइंट करिकि रखुचो दैट इज फोरकास्टिंग तापरे द टाइम हॉरिजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन डैश the time horizon selected for forecasting depends on एडारो किछि पॉइंट्स मिस हे जेछि प्लीज राइट डाउन selling capacity of salesman बीर अछि ना ओके फाइन ले कोन मिस हे जेछि purpose for which forecast is made
ओके तळु को पळै छि सेडा ओके लिखि दियडी पर्पस फॉर व्हिच forecast is made purpose for which forecast is made and time required for production cycle एबे को आंसर टा purpose for which forecast is made एडा गुटे अछि सेटा तळु को पळै छि the time horizon selected for forecasting depends on answer come on answer 18 number ta sorry 17 number ta no it's not D the answer is C purpose for which forecast is made the time horizon selected for forecasting depends on तमे केतळ पय करूछ फॉर एग्जांपल हम एडा करलु शॉर्ट टर्म पे नोचु त मैंने मशीनरी केते दरकार से हिसाब रे 3 दिन पे हमें काम रे डिसाइड करिवु जदि हमको लॉन्ग टर्म रे नवर अछि त हमें को लॉन्ग टर्म डिसीजन करियर अछि तो लॉन्ग टर्म रे भाबे हैला लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन पे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग ओके बुझिला ना आउथरे बुझेबी ओके application of technology sorry out of question royal important factor for production forecasting production is important factor for forecasting production is important factor for forecasting production is important factor for forecasting production is no, it's not B the answer is available capacity of machines से forecasting production कहिच रे बहुत इजी क्वेश्चन डा एडा हां बहुत इजी क्वेश्चन डा केमती तमे मिस कर देलो प्रोडक्शन एक्टिविटी को कोन डायरेक्टली लिंक हेगी अछि ए पॉइंट्स रे प्रोडक्शन एक्टिविटी को कोन लिंक हेगी अछि मशीनरीज लिंक हेगी अछि कंज्यूमर्स आर सेकेंडरी इनिशियली मशीनरी जदि तमरा ठीक नै मशीनरी अवेलेबिलिटी ठीक नै हाउ डू यू स्टार्ट द प्रोडक्शन फोरकास्टिंग प्रोसीजर हैला टिके कॉमन सेंस यूज करियो application of technology or process to the raw material to add use value is known as एडा जति कहि परियानी then guys you have to think twice संगे संगे आंसर आसिया कथा come on quick very good Piyush see भाई application of technology is there in the question सेडा केबे आंसर होई परियानी टिके भागो online slab option is not given yet I'm regretting now the answer is B okay application of technology or process to the raw material to add use value माने कोन ultimately कागो usable state को आनियार माने कोन हला एडा production activity okay 20 number देखो in production by disintegration the material undergoes what the material undergoes disintegration of material माने कोन गोटे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल तमे आनलो सेडार किछि पार्ट किछि जिंस पे यूज करछो किछि पार्ट आ किछि जिंस पे यूज करछो तो माने गोटे रिसोर्सेस रो मल्टीपल यूसेजेस कहि परिबो तमे टिके भाबिला आंसर जाना पड़ियो you have to practice
Answer? No, it's not A. Very good. The answer is B. Change in physical and chemical characteristics. Soldatidina. Soldatid. Change in physical and chemical characteristics. Disintegration of the material. Change in economic value माने कौन? Revaluation सेड़ा. Change in technology माने कौन? Production activity सेड़ा. Production activity को related. एडी production by disintegration से कोइच. प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन कहछि डिसइंटीग्रेशन रो मीनिंग मध्ये मो कहली सेडा को तमे चेंज करबो गुटे अगर रॉ मटेरियल को अलग अलग मैनर रे यूज करियो तो सेडा रो केमिकल फीचर्स को तमे चेंज करियो केतेडा जिंस गरम करी यूज करियो केतेडा जिंस ठंडा करी केतेडा जिंस कंप्रेस करी तो सेडा रे कोन होछि फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होछि ओके वर्ड्स रो मीनिंग बुझियाला इंपोर्टेंट use of any process or procedure designed to transform a set of input elements into a set of output elements is known as तुमको सेम सिंपल जिंसडा को से कंफ्यूज करी केते प्रकार दोछ देखो एवरीथिंग इज योर एग्जाम क्वेश्चंस 2008 रो नेगरी use of any process or procedure designed to transform a set of input elements into set of output elements input को जदी से output रे कन्वर्ट करूची किछि उडे प्रोसेस और प्रोसीजर टेक्नोलॉजी सब अप्लाई हैला त कोन हैला एडा वेरी गुड सुभश्री सुवर्णा द आंसर इज प्रोडक्शन ओके सेम जिंस को से कंफ्यूज करची तापरे which one of the following is the external factor impacting the effecting capacity effective capacity एडार मध्ये तळक पळा आछि टिके कंसीडर करंदो which one of the following is the external factor impacting effective society आगे effective capacity sorry effective capacity को पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड टा इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इंपैक्ट पकेबो ओएम सब्जेक्ट समस्त को इजी लागि पारे एसएम आउरी भी इजी लागि पारे बट ओएम एंड एसएम बिट क्वेश्चंस आर नॉट दैट इजी एक्सटर्नल फैक्टर इंपैक्टिंग द इफेक्टिव कैपेसिटी कोन हे परियो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स वेरी गुड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स बुझि पाला माने पर्टिकुलरली गुटे प्रोडक्ट ऊपर किछि हेले वेरी गुड सर ना प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स कोन पई ना पर्टिकुलरली हमरो किछि हेले हम प्रोडक्ट ऊपर किछि हेले स्टैंडर्ड्स जदी से माने इंप्लाई करचंदी किबा एक्सपेक्टेशन रखि चंदी कि योर प्रोडक्ट शुड मैच ओनली दिस स्टैंडर्ड्स तो से सब जिंस गुडा को बहुत प्रेशर पके दबो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऊपर काहेकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रो तो पूरा ध्यान को ऊपर रहयो रिसोर्स रो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन केमति होबो ता ऊपर रहबो बट इंस्टेड ऑफ focusing on this particular objective तांकर कोन एबे फोकस पड़ोछि तांकर स्टैंडर्ड ता केमति हम मेंटेन करिया काहेकि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को मैच न करले हमर कोन इफेक्टिव कैपेसिटी ऊपर गुडे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा आसीबो ओके तापरे इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ऊपर डिपेंड होछि डायरेक्टली क्वेश्चन रा आंसर ता अछि टिके भल से भाबी की को फ्री मार्क्स माने एमटीआर क्वेश्चन सब वेरी गुड सुभश्री द आंसर इज एबिलिटी टू इंक्रीज इफेक्टिव कैपेसिटी इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन माने कोन एबिलिटी टू इंक्रीज इफेक्टिव कैपेसिटी ओके then which one of the following is not within the purview of long range planning long range planning under a कोडा आसुनी हमरा long range planning under a कोडा आसुनी other students answer very good Shubhashri very good Piyush answer is D okay not within the purview of long range planning माने कौन good मेघना So building a new facility, expanding the existing facility, moving to new facility due to forecasted changes in demand,
प्रिपरेशन ऑफ ओवर टाइम बजेट फॉर द वर्कफोर्स देख लॉन्ग रेंज प्लानिंग भितर कौन आसीबो सब मन रख कोडी भूल हला तमरा देख लॉन्ग रेंज प्लानिंग अंडर सब आसी सर्टेन जिंस गुडाक माने आमे जानिछु कि ए जिंस पर्टिकुलरली हेबा दरकार बाध्य तो से कोन कोछि नॉट विद इन द परव्यू तो नॉट विद इन द परव्यू रे कौन आसीबो बजेट टा ओवर टाइम बजेट वर्कफोर्स को देख ओवर टाइम केबे आमे करछु जेतोला हमर किछि ले इमीडिएट ऑफर टा आसुछु कि इमीडिएटली किछि मनर केते दिन हला हमर बंद हेला ऑफिस टा फैक्ट्री बंद हेला मशीनरी खराब हेला तो प्रेशर गुडा को कमिया पे टिके टिके करिके ओवर टाइम तमे करिवो तो सेई जिंस कोन सर्टेनिटी अछि कि नाही सेटा केतोळ को करिवो ओवर टाइम दरकार पड़ले तापर सिना बजेट पकेबो केबे गुडे ओवर टाइम हबो केबे गुडे म एते बजेट देले आपुड प्लानिंग करियोगी नाही तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग रे सब बळे त मन रखिया सर्टेन जिंस आगे आसीबो अनसर्टेन जिंस केबे भी आसीबोनी ओके fine 25 देखो the basic difference between the slack and float time is so this is the chapter from this is a question from PERT and CPM तो तमरा formulas रे अछि तो what is the difference between slack and float time difference कोन slack variable माने कोन float variable माने कोन very good मेघना the answer is A तो slack कौन पे यूज होची इवेंट्स पे फ्लोट कौन पे यूज होची ओके शुभश्री ओके सुहाना वेरी गुड एक्टिविटीज पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना पर्ट सीपीएम रो बहुत क्वेश्चंस अछि बट इंपोर्टेंट गुडा हम काढी छी मोस्ट प्रोबेबली चांस जोड़ा अछि आसीबार a slack is used with reference to events whereas a float is used with reference to activities okay which one of the following is not a factor of determining economic lot size for manufacturing which one of the following is not a factor in determining economic lot size for manufacturing economic lot size माने कोन रे हमर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिंदी इकोनॉमिक लॉट साइज सेमिति माने गुटे पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसीजर रे माने गुटे टाइम रे केते प्रकार जिंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करले किमा केते क्वांटिटी रे प्रोड्यूस करले हमरो इकोनॉमी टा बाहर माने कॉस्ट रे टिके कमिया मनरो देखो एबे जदी मशीनरी ऑन करले 10 टा प्रोडक्ट न चल 10 टा प्रोडक्ट चली परियो तम गुटे प्रोडक्ट पे दीडा प्रोडक्ट पे जदी ऑन करछ तमर कॉस्ट पड़ जिवो बेकार रे तो केते थिले सब जगह इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी रो इफेक्टिवनेस टा बाहरिबो तो सेटा होची क्वेश्चन which of the following is not a factor in determining economic lot size come on happy ko D नहीं come on quick okay very good Meghna the answer is A the answer is A it's the production schedule हैला एटा डिटरमाइन करि पारे माने गुटे फैक्टर नै यूसेज रेट अछि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अछि कॉस्ट ऑफ डेटरिएशन माने खराब हैला हम केते कॉस्ट पडुची रॉ मटेरियल सेटा मध्ये गुटे फैक्टर काहेकि तो जल्दी यूज करू तो से कॉस्ट पड जिवो जल्दी यूज करू तो ए कॉस्ट बढ़ियो तो सेटा गुटे फैक्टर बट प्रोडक्शन शेड्यूल माने कोन तो कर दीची को आ पर एडा हबो बुझि पालो के गुड मेघना which one of the following is not a factor in planning service capacity not a factor in planning service capacity एडा रहला मैन्युफैक्चरिंग रो एडा होची सर्विस रो टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस which one of the following is not a factor in planning service capacity very good Shubhashri very good Piyush answer is A period of production जिमते हमरो प्रोडक्शन शेड्यूल ओके मेघना ऑप्शन नंबर A period of production ओके तो दी प्रकार क्वेश्चन गुडा
It is an extra capacity used to offset demand uncertainty. This is what? को particular जिनस अंडर आस्चेड़ा. एटर जिनस गुड़ा को टिके एफर्ट से पड़े ही जाइए. I am writing the extra options here. 28 नंबर टा. तोड़ो को पढ़ा आस्ची. Manual errors. 28 रो other two options are. Effective capacity minus actual output, and D number option is हेडी तम रेडी अछि. Capacity cushion is equal to capacity minus effective capacity. Effective capacity. The answer कोड आबा. मदद तो 28. Answer is कोड आबा. The answer is B. Capacity cushion is equal to capacity minus expected demand. हैला एटा सीएम मॉड्यूल रो आनी चंदी क्वेश्चन डा एग्जाम रे. एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज्ड टू ऑफसेट डिमांड अनसर्टेनिटी. तो डिमांड अनसर्टेनिटी मैच करिया पे कोन हमर क्वेश्चन कैपेसिटी केते होछ. क्वेश्चन इन द सेंस कोन why are we using a क्वेश्चन माने होछ गुटे मैट्रिक्स कोन पे हम यूज करछु टू add extra protection. बुझी पाला. तो कैपेसिटी माने एक्जिस्टिंग कैपेसिटी माइनस एक्सपेक्टेड डिमांड मिसे माने माइनस कर देले हम पाखरे जेतिके कैपेसिटी बळका रहउची सेडा हम प्रोविजन रे रखि परिबा अनसर्टेनिटी मीट करिया पई. मनर किछि अनसर्टेनिटी हला किबा एक्स्ट्रा ऑर्डर सडनली पळा आसिला तो से जिंस पे हम यूज करिबा ए पर्टिकुलर कैपेसिटी. तो एडा आसमर कैपेसिटी क्वेश्चन अंडर. बुझला समस्त को. Is it clear or not? The 29 question ला देखो. Which one of the following is correct? Okay, thank you Prakash. The other two options mu highlight कर दोची. Heading the other two options एपटे पड़ा आछि. Please consider them for this question. 29 रो ऑप्शन नंबर ए होची कैपेसिटी डिसीजन डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्ट लीड टाइम्स. ऑप्शन बी होची कैपेसिटी डिसीजंस मस्ट लिंक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चैनल्स इन द होल ऑपरेशन चेन. तापरे सी होची एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजी does not help a firm to reduce its cost and compete on price. तापरे डी होची wait and see strategy improves market share over the long run. तो कोडा तमको लागुची which one of the following is correct actually. 29 number. Answer please.
The answer is B. Capacity decisions must link backward and forward channels in whole operation chain. The answer is B. Okay, Subhashri, very good. The answer is B. Leading capacity strategy. Leading capacity strategy माने कौन? Leading capacity strategy. एड़ा आंसर इजी का आंसर टा तमे भाबिले कहि परियो. Leading capacity strategy. It's not B. Very good. The answer is A. Builds capacity in anticipation of increasing future demand. देखो leading माने होची rising. Obviously, तो rising सेडा हबो ना नहीं कहि कि तुमे की जानिबा. Anticipate करिबो. जदि तुमको जाना पड़छि कि तमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट तमर वुलन इंडस्ट्री तो बहुत शीत हबो कहि कि ये मेजर्स आसुची आ बाकी सब बहुत एक्सपेंसिव रहउची तमर डिमांड भल होची तमर बिजनेस भल चालची तमे कोन लीडिंग कैपेसिटी स्ट्रेटजी इंप्लाई करि परियो माने कोन बिल्ड्स कैपेसिटी गुड दिना मेशन एक्स्ट्रा आनले भी किछि प्रॉब्लम नै पैसा बाहर पड़ियो काहेकि यू आर एंटिसिपेटिंग एन इंक्रीज इन द फ्यूचर डिमांड दिस इज नोन एज लीडिंग कैपेसिटी स्ट्रेटजी 31 देखो which one of the following does not reduce effective capacity does not reduce effective capacity. Which one of the following does not reduce effective capacity? Very good, Subhashri. The answer is efficient distributors. Efficient distributors. Effective capacity रा meaning कौन? चावल इथियो गोटे आओ. Effective capacity रा meaning होची whatever things you are having actually. हला केते जिनसे तमे प्रोड्यूस करि परिबो using whatever you are having. तो सेतिर आसम रे efficient distributors. Distributors रा काम कोन? हमर पूरा प्रोडक्शन सरला पर तांकर काम स्टार्ट होची. बुझि पारलो ना? तो सेति पे which one of the following is an operational factor that determines effective capacity? That determines effective capacity. Which one of the following is an operational factor that determines effective capacity? Here it's not B. Operational factor that determines effective capacity. No, it's not C. The answer is D. Okay, good, Suhana. The answer is D. Bhavo, not is an operational factor that determines effective capacity. तमे भाबो एबे गुड थरे निजे भाबो गुड थरे पढ़थिला ना नहीं कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कैपेसिटी इफेक्टिवनेस ऑफ कैपेसिटी रो कॉम्पिटिटिवनेस फैक्टर तमे चारटे जिंस पढ़थिला सेतरे क्वालिटी थिला ना नहीं so that's why the answer is quality. Which one of the following is not a factor for impacting effective capacity? Not a factor for impacting capacity. Not a factor impacting effective capacity. Very good, Subhashri. The answer is D. Market share. Thank you. Mukoili again. Seda sales and distribution. Good, Suhana. So sales and distribution under seda asuchi. Okay. 34. The benefits of high utilization are realized only when ketologu realize hoji. Wait, we are missing. We're missing on some points.
breakdown maintenance is minimum. Breakdown maintenance is minimum. D1 is demand for output. କୋଉଠି ଅଛି ତଳେ ଅଛି ନା सी ऑप्शन कॉल है ସେଇଟା ଏଟା manual errors. Hey, there is a demand for output. Type of answer. No, the answer is not A. Also happy ke कहंदु the answer is D. Very good. The answer is sorry ठीक अछि there is the answer is D. कौन पे हला at least कागो any idea? कौन बोलছো? Yes. Key explanation. Okay. 36 number टा देखो. Utilization of an operation facility is measured by formula. 35. Key to improving capacity utilization is. Key to improving capacity utilization is. D number टा एडी अछि देखो. Key to improving capacity utilization is. Key to improving capacity utilization is very good. Meghna, it is A. To increase effective capacity. Already. Utilization of an operation facility is measured by. को formula रे measure होची. Very good, Swana. Actual output by design capacity into 100. Efficiency of an operation facility. एडा रोइला हमरो utilization रो formula डा एडी efficiency रो formula डा 37. को efficiency रो Meghna, very good. Option number C, actual output by effective capacity into 100. Efficiency. Actual output by effective capacity into 100. तमर efficiency रा केमती measure करियो. Full marks तळे रहइबो. तापर actual marks आसीबो into 100. सेडा होस तमर efficiency. हैला. Full marks आउ institute university केते दोचे ता ऊपर करके तमे efficiency बाहर कर परियो. ओके? सिम्पली मन रखियो. Out of balance capacity occurs dash. Balance capacity रे कोन occur होची? केतळे occur होची? कोन occur होची balance capacity? Very good, Suvana. The answer is C. When there is a gap between current and desired capacity. Current and desired capacity. Okay, fine, good. The
goal of capacity planning of an organization is, capacity planning of an organization ro objective कौन, goal कौन? Answer. It's not C. Planning of an organization. Capacity planning. No. The answer is D. पिला जे सब कही देले D छाड़ी. Okay, fine. Capacity planning objective कौन? Long term supply capabilities और predicted level of long term demand भितरे difference टे बाहर करियारो. ओके किंबा मैच करियारो. जदि किछि तांके मैच करि पार ना तो एबडो तांके कोन करिए प्लान करिवे. Capacity refers to what? Capacity refers to important question that. Capacity refers to an upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle. सेटा होचे कैपेसिटी केते हैंडल करि परिबे तांगे. ओके this denotes the highest output established by the actual trial runs of the productive machines installed. को जिंसो को बुझोचे ए जिंसोडा ए पर्टिकुलर पैराग्राफ टा. Most people do a biggest mistake here. ये वर्ड को ध्यान रखिए आंसर दियो. Go answer. D. The answer is rated capacity. Rated capacity. No, it's B. Rated capacity. Okay. Design capacity, effective capacity, licensed capacity भी नहीं. Licensed capacity is entirely different. ताको कितने जिनसे पे permission दिया है? That is, I think, licensed capacity. Let me just check. Yes. Maximum permissible usage सेटा होची हमरा licensed capacity की. एडा होची rated capacity. तो तुमको जतलो कोन क्वेश्चन रो एग्जैक्ट मीनिंग जणा पड़नी तमे कोन करिवो डिडक्शन मेथड रे जो माने एडा ना तो कोड हेतिबो. तो रेटेड कैपेसिटी रा मीनिंग होच माने एडा केते अलाउ करबो माने गुडा नुवा मशीन आसिला रे से नुवा मशीन रो केते लेवल अछि माने आम पर्टिकुलर इंडस्ट्री को धरि कि से मशीन टा केते माने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्स दैट दिस पर्टिकुलर सिस्टम कैन हैंडल इज डिजाइंड टू हैंडल maximum possible resource or component a new machinery is able to handle under specific conditions. माने तम इंडस्ट्री को धरिकी तम इलेक्ट्रिसिटी को धरिकी तमर जा गरम एनवायरनमेंट को धरिकी ताको केते तमे प्रेशर दे पारे. ओके which one of the following is not a key question in capacity planning? कोड़ा की क्वेश्चन है कैपेसिटी प्लानिंग अंडर में. मेक नाइस सेइंग बी. रिमेनिंग पीपल it's not D, it's B.
बुझी पाला नॉट अ की क्वेश्चन कहला माने एटा गोटे क्वेश्चन बट नॉट एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तापरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन what is capacity utilization come on quick answer the question it's not C or D it's A the degree to which a resource such as equipment space or workforce is currently being used रिजर्व कौन पे हेल्प करिया कैपेसिटी माने तो एक्जिस्टिंग जिंसडा एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट एक्सीड इफेक्टिव कैपेसिटी बिकॉज़ को रीजन लागि एक्सीड करि परिबनी very good Suana the answer is rejection due to quality problems हला हम रॉ मटेरियल टा एते आनिबो हमहु 100 kgs को 200 kgs ऑफ आउटपुट आसुची कि 100 kgs को 50 kgs ऑफ आउटपुट आसुची बट एक्चुअल आउटपुट आसला को 45 की 42 की 30 की जहां भी आसुची कोन पे एमती आसची ना बिकॉज़ दे आर रिजेक्टिंग द फेल्ड वंस माने हमें जानि परछो एडार क्वालिटी भल नै ए पर्टिकुलर रिसोर्स रो तो से रॉ मटेरियल हमें यूज करूगी जेते से जा सब कटुची सेड रो तो लास्ट को कौन हबो एक्चुअल आउटपुट टा भी डिफरेंशिएटेड हो जिवो फाइन गुड नीड फॉर पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट ऑलवेज मेक्स डैश always makes dash D answer the answer is C design capacity greater than effective capacity if design capacity is reduced by allowances such as personal time and maintenance the resultant capacity is dash if design capacity is reduced by allowances such as personal time and maintenance, the result capacity is dash. This effective capacity, obviously. तमे गुटे पर्टिकुलर जिंसो डिजाइन करछो यू हैव डिजाइन्ड अ पर्टिकुलर मॉडल कि को प्रकार सेडा यूज करबो देन कोन होची सेतरे पर्सनल टाइम तुमको काढिया पड़िबो बिकॉज़ मशीनरी तमे कहियो कि 3 घंटा हम यूज करू दिन को कि 5 घंटा यूज करू तो कंटीन्यूअसली कि यूज करियो कि इवन द मैन फोर्स नीड अ पर्टिकुलर गैप तो सेडी कोन होची सेडा टिके डिडक्ट करबो तापर मेंटेनेंस मशीनरी रो जहां भी ठीक ठाक टिके देखिबो ऑयलिंग वगैरह करबो तो से जिंस पर यू विल डिडक्ट सम टाइम तो टोटली जहां भी आसला नेट कैपेसिटी को हमें कहउछ कोन इफेक्टिव कैपेसिटी this capacity is the maximum rate of output achieved under ideal conditions
achieved under ideal conditions. Under ideal conditions. टिके भाबिकी कहंदो. The answer is design capacity. Design capacity ର meaning I don't know you people ଲେଖିଛ ନା ନାହିଁ separately. ଯେହେତୁ ଏତେ ଥର ଆସୁଛି ତ I am making you write. Design capacity ର meaning ଲେଖିଦିଅ ପାଖରେ ଆଗ. better ହବ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ମତେ ଲାଗୁନି ତମାନେ meaning ଜାଣିଛ କହିକିରି because meaning ଜାଣିଥିଲେ you would have probably answered. Fine, not an issue. Like for maximum output. Maximum output. An entity ର कौन machine or process or system, machine or process or system is theoretically capable of producing under ideal fully functional conditions. Hala? So theoretical assumptions. Dettol 99.9% germs को मारुची ना. So it's a theoretical assumption. hala? और 0.01% रो को germ थियो. एते जण मरियल तो सेडा माने ये हेगी मरजियो दुखरे मरजियो. तो Dettol officially केते 100% germs मार दोची. Okay, that is a design capacity. Fine. Maximum output सेडा. तो ଏବେ देखो capacity is the maximum rate of output achieved under ideal conditions. Ideally एली कहले कोन गुटे पिल्ला ideally 10 घंटा पाठ पढले रैंक पळा आसिया कथा. तो सेडा सबले theoretical जिंस 2-3 घंटा consistently पढी के मध्ये जाने अचीव करि पाछ. So that depends. Okay. तापर देखो which one of the following is an output measure of capacity? Output measure of capacity कोडा. Output measure of capacity. No, it's not D. Output measure of capacity. Very good. The answer is C. The aluminum giant XYZ produces 30 MT in a day. 30 MT in a day. गोटे पर्टिकुलर जिनस मन रखा पड़ो. तमें ठीक कही ओके डी ऑप्शन टा ठीक अच्छी बट आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी अंडर आसबनी सेटा इफेक्टिव कैपेसिटी अंडर आसब. ओके इफेक्टिव कैपेसिटी अंडर आसब कहीं सब जगह हेगिरी पर्टिकुलरली ता पाखरे केते रिसोर्स रहउची केते रिसोर्स बंचुची हला से केते कहि पारिबो कागो से पर्टिकुलर जिंस अंडर आसब. एंड एडा भी डिपेंड करछि जदी से इफेक्टिव कहियो ना से डिजाइन कहि पारियो सेडा किछ नै. बट आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी रो मीनिंग मु कहउछि देखो माने कैपेसिटी जोडा कि गुटे स्पेसिफिकल टाइम ऊपर डिपेंड करछि. तो आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी रो मीनिंग दा लेखो तमे देन तमे मते आंसर करो ए क्वेश्चन टा.
आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी तमे जति की बुझछ सेथरे बहुत भलो आंसर करछ बट देयर आर सम कीवर्ड्स जोड़ा आई डोंट थिंक सो से लैक ऑफ से अवेयरनेस लगी हे पारुनी मु से डेफिनेशन ता लेखो छी तमको प्लीज राइट डाउन quantity of finished goods or services produced by an operation typically measured over a specific time period. This is the key word here. Specific time period such as units produced per day. एटा अंडरलाइन करंदो. Units produced per day or per week. से स्पेसिफिकली दीटा जिनस मेंशन करला देखो एटा होची मीनिंग ऑफ आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी. एबे मते को आंसर टा कोन होबो आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी माने कोन से कहिला केते क्वांटिटी तमे प्रोड्यूस करि पारछ टिपिकली बट से को पर्टिकुलर पीरियड को धरि के कहला जे पर डे कोची किमा पर वीक कोची माने टिके टिके यूनिट्स रे से देखुछ माने एतिकी एतिकी टाइम रे केतिकी केतिकी होची कहि के समस्त बुझिला ना बुझिलानी क्लियर और नॉट एते टाइम काई लागु छ तमन को आंसर करिया पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which one of the following is a feature of input measure of capacity okay suraj thank you thanks for responding input measure of capacity रा मीनिंग कोन से मीनिंग न जानि तो तमने किछे आंसर करि परियन input measure of capacity रा मीनिंग लेखा resources manner in which resources or inputs available okay we'll be discussing till 50 number probably okay एडा रो तमरो कांसेप्ट गुडा का बहुत किछि अछि जोडा कि तमे नोट डाउन करी के अलगरे प्रैक्टिस करो देन ओनली आई विल प्रोसीड विथ द रिमेनिंग थिंग्स बिकॉज़ किछि मीनिंग नै जदि तमने एमति करी के जाउछो तो इनपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी रा मीनिंग लेखा मैनर इन व्हिच द रिसोर्स आर इनपुट अवेलेबल टू a system are used to assess its ability to produce output or deliver services एबे मते को आपको धरि के आंसर ता को मैनर रे यूज होची इनपुट्स गुडे सिस्टम यूज करची एबिलिटी टू प्रोड्यूस तारा इंक्रीज करिया पई तो व्हाट विल बी द आंसर हियर ऑफ द 49 नंबर एबे मते को द आंसर इज सी तमे ए दिटा कांसेप्ट भल से बुझले जाई कि करि परिबो सेटा को धरि के टिके आंसर कर
Which one of the following is not a feature of output measure of capacity? ताको धरी कि बहुत जिंस आसुची output and input measure of capacity को धरी output measure of capacity रा meaning दा मैं already देखिलु एबे देखो तारो येडा. It is applicable when the firm provides a relatively small number of standardized services and products, mainly in case of high volume, used for low volume flexible process such as furniture maker, less applicable when amount of customization and variety in the product mix increases. Koda habo. Last question. एटा को धरी कि आंसर करो ट्राई कर आंसर करया पे. Fine. The answer is generally used for low volume flexible processes. मु कहली एटा को ये को हिसाब रे हबो ना small quantities रे हबो small volumes रे हबो माने per day केते होची per week केते होची कोन होची से सब जिंस को धरि के होची तो that's why it is not टा काटे दियो is a feature टा ऐड कर दो. Okay, ठीक अछि. Remaining things we'll discuss in the next class.